Let's begin the most awaited trip to Varanasi, Banaras और काशी। लेनी थी सुबह 6 बजे वाली वंदे भारत from platform 16 and we reached at New Delhi railway station around 5:15. The train entered at 5:30. तब तक हमने ले लिया एक समोसा क्योंकि बहुत भूख लगी थी। The journey was 8 hours long. We started 10 minutes late. Well, was served water and tea immediately after and then came this breakfast का tray. बहुत देर सोने के बाद we reached कानपुर सेंट्रल 2 घंटे लेट। वाराणसी वंदे भारत has only 3 stops, but मैं prefer करूँगी sleeper AC than a chair car if I have to go to Varanasi again. Finally we reached. Fuel time to reach Varanasi junction was 2 p.m. but late थे तो पहुँचे around 4 p.m. होटल में सेटल होकर हम निकल पड़े फिर से बनारस दर्शन को। फर्स्ट स्टॉप काशी चाट भंडार। यहाँ खाए हमने टमाटर चाट और पालक चाट और फिर पी ये बढ़िया सी चाय राइट नेक्स्ट डोर। पूजा के बाद निकल पड़े हम 80 घाट को। 80 घाट was amazing. You can buy chunky jewelry, eat Maggi, momos, tea and enjoy the view of Ganga Ji. म्यूजिक तो जैसे हवा में था 80 घाट की और मे बी कंप्लीट बनारस की। We experienced and enjoyed 3 jamming sessions in that one night. अब आप सुनिए। पे स्वाद रखना उनके संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी रब सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया मेरे या चंदा मेरे या चंदा मेरे पिया चंदा मेरे या चंदा मेरे या चंदा मेरे या ओ पिया। After these two we decided to leave but then we saw this Maggi वाला भैया and हमें था कि अब हम मैगी तो खा के जाएंगे। हम वहाँ से निकल ही रहे थे and then there was this another session that we had to experience. Banaras, a warm, peaceful and a magical city. डे 2 पे एकदम सुशील बालिका बन के हम निकल पड़े सुबह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ जहाँ पे है ओल्ड काशी टेम्पल।
ये टेम्पल की एंट्री है, आप बाहर भी यहीं से आएंगे. यू कैन हैव द कॉफ़ी हियर, दैट्स अमेजिंग. साउथ इंडियन बोला जाता है अच्छा है, बट यू कैन स्किप इट. मंदिर से निकले हम शॉपिंग की तरफ, बट पहले हमने सोचा लेट्स हैव मलइयो. बनारसी लेने के लिए आपको बहुत लोग अप्रोच करेंगे, बट बी वेरी केयरफुल एज फेक इज कॉमन देयर. I wanted to buy from an authentic seller, found him through a fellow YouTuber. He is located in Kunj Gali near Manikarnika Ghat Gali. His details will be in the description box. And we reached Rukmini Silk. What all we shopped? Well, I will create a short video of it. Quick note, please have a few hours in hand for the shopping. It takes a lot of time. 4 hours later, yes, that's how long we took to shop. हम चल पड़े वापस होटल को, but बीच में we had long lata, an amazing sweet dish, then tea, then bun maska and some vada pav. Street food is amazing here. Day 3, also the last day of 2023, started super early, at 3 am. We couldn't get tickets of Mangla Aarti of Kashi Vishwanath temple. It has to be booked months in advance and we were unaware. So we took Sugam Darshan ticket of slot 4 to 6 am to avoid rush. A lot of do's and don'ts applies to this temple and the website to book I will mention in the description box below. आप अपनी बुकिंग की हार्ड कॉपी ले जाना मत भूलिएगा. The next stop was to experience the newly built corridor. You can ask the police to help you find the way to it. At least that's what we did at 4:30 am. Isn't it beautiful? We saw the amazing view of Ganga and many ghats. On our left was the Manikarnika Ghat. Then we decided to go for a boat ride. It was the amazing time of the day. The sun was about to rise. बोट वालास will ask obnoxious amount, but please bargain करिएगा अच्छे से. Also बोट से उतरकर और मांगेंगे ऊपर से बोट वाला, and that's your choice to entertain or not. We opted for hand pedal boat to avoid the noise and experience the beauty. It took us 1 hour 15 minutes to cover 42 ghats. We reached Assi Ghat at 7:20 am. घाट से निकलकर हमने किया सुबह का ब्रेकफास्ट एंड हैड अ कप ऑफ अमेजिंग टी. देन हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ और वो था संकट मोचन मंदिर. इस मंदिर का प्रसाद अंदर से ही लीजिएगा, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद समवन देन टेक टर्न्स टू विजिट इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग योर फोन्स आउटसाइड एंड एंटरिंग टुगेदर. इट्स अ लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड बट अदरवाइज अ ब्यूटिफुल टेम्पल. अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था भैरवनाथ का मंदिर. हमें 12 बजे से पहले ये सारे कंप्लीट करने थे क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं. There was a line, बट हमारे दर्शन आराम से हो गए. मोस्ट ऑफ दीज मंदिर में पिक्चर्स खींचना मना है, इसलिए आपको मंदिर का अंदर का फुटेज नहीं मिला है. यहाँ पे आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं, बट देन अगेन पिक्चर्स नहीं ले सकते. निकलकर हमने लंच करा बाहर ही और फिर जाकर करा होटल में थोड़ा रेस्ट.
दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती है सबसे फेमस एंड वहीं के लिए हम निकले शाम को 4 बजे। वहां जाने के रास्ते में वी फाउंड अ लॉट ऑफ शॉप्स टू विजिट लेटर। गंगा आरती शुरू होती है 6:20 पे और 1 घंटा चलती है एंड आप जितना जल्दी हो सके पहुंच जाइए टू ग्रैब अ बेटर प्लेस। आप इसको बोट से भी देख सकते हैं। नाउ आई लीव यू टू एक्सपीरियंस वट एवर आई कुड कैप्चर ऑफ दिस ब्यूटिफुल रिचुअल। నానిగారిని ఆఫీస్కి వెళ్ళమన్నారు. రెడ్డి సార్ ఉన్నాడు సైట్లో వర్కర్స్తో మాట్లాడుతున్నాడు. నైట్ అదే వాడు వెళ్ళిపోయా. అదే సురేందర్ రెడ్డి సార్ मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। और इसी के साथ दिस ट्रिप केम टू एन एंड द नेक्स्ट डे 1st of January। हम वापस आए वंदे भारत से टू दिल्ली। Until next time।